हाँ जी बेटा, अज ਆਪਾਂ ਹੋਰ क्वेश्चन करांगे एक्सरसाइज दे। द क्वेश्चन इज इफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x takes the value 0, 1, 2, 3 and so on, then we are to prove that expectation of x is equal to summation n varies from 0 to infinity probability x greater than n। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू समीशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन n। नो अगर ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ हैंड साइड की गल करिए, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ एक्सपेक्टेशन x इंटू एफ एक्स और पी एक्स and values of x 0, 1, 2, 3 and so on up to infinity। Now for x is equal to 0, it is 0 p0, 1 p1, 2 p2, 3 p3, 4 p4 and so on। Now this is becoming 0। we will get 1 p1, 2 p2 plus 3 p3, 4 p4 and so on। this is the left hand side, means this is expectation of x। now we will solve right hand side। summation n varies from 0 to infinity probability x greater than n। first of all we will put the value of n equal to 0, x greater than 0, plus then we will put the value of n is equal to 1, 2 and so on। now बेटा अगर असी probability x greater than 0 ਨੂੰ अगर solve करिए तो ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जाऊगा probability at x is equal to ਕਿਹੜੇ पॉइंट आ गए 1, 2, 3, 4 and so on प्लस फिर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन 1 की अगर गल करिए 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन 2 दे विच 3, 4, 5, 6 सो ऑन। उस तो बाद प्रोबेबिलिटी आएगा तुहाडे कोल x ग्रेटर दैन 3 ते अगर असीं वो भी इंक्लूड कर लीए x वो तुहाडे कोल स्टार्ट हो जाएगा 4, 5, 6 एंड सो ऑन। Now from this one, which is equal to probability at x is equal to 1 plus probability 2, probability at 3, probability at x is equal to 4 and so on। this is from the first factor, from the first term। now we will solve this one। from this one we will get probability at x is equal to 2, probability at x is equal to 3, probability at x is equal to 4 and so on। from this one we will get probability at x is equal to 3 plus probability at x is equal to 4 and so on। now from this one probability at x is equal to 4, probability at x is equal to 5 and so on। now adding all these, so probability at x is equal to 1, there is only one term, probability at x is equal to 1 plus 2 times probability at x is equal to 2 plus probability at x is equal to 3, it is coming 3 times, so 3 into probability at x is equal to 3 plus 4 probability at x is equal to 4 and so on, which is equal to जेडी असी पहला लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी। लुक एट हेयर एक्सपेक्टेशन ऑफ x विच इज इक्वल टू 1 इंटू p1, 2 इंटू p2, 3 इंटू p3, 4 इंटू p4 एंड सो ऑन। सो क्लियरली फ्रॉम दिस वन वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x। हेंस we can say that expectation of x
is equal to summation n varies from 0 to infinity probability x greater than n. Now beta, I am going to start new topic, mean and variance of random variable. Mean and variance of random variable. Now arithmetic mean तुसी already पढ़िया होया. The mean mu of random variable x is defined as mu is equal to expectation of x. हुण जेड़ा सी arithmetic mean find करना using expectation of random variable. हुण जेड़ा mu आ that is equal to expectation of x provided expectation of x exist. So expectation of x exist करना चाहिए, then mu is equal to expectation of x. मतलब अगर असी expectation of x फाइंड करांगे तो जो भी आंसर आएगा that is equal to the mean of random variable x and it is denoted by mu. Now next is variance. The variance sigma square of random variable. Variance ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ denote ਕਰਦੇ ਹਾਂ sigma square ਨਾਲ. सिग्मा ਨੂੰ ਅਸੀਂ denote ਕਰਦੇ ਹਾਂ standard deviation ਨਾਲ. सिग्मा ਨੂੰ denote ਕਰਦੇ ਹਾਂ standard deviation ਨਾਲ ਤੇ variance ਨੂੰ standard deviation ਦਾ square means sigma ਦਾ square. Sigma square. So variance sigma square is equal to variance of x. So variance of x using expectation is expectation of x minus mu whole square provided it exist. Expectation अगर exist कर दिया then this expectation of x minus mu whole square will be equal to variance of x. Also we know that mu can be written as expectation of x. So we can also write it expectation of x minus expectation of x whole square. Okay. Now we will discuss properties of variance. Now sigma square is equal to expectation of x square minus expectation of x whole square. देखो अगर असी वेरिएंस की गल करिए तो फर्स्ट नोटेशन, सेकंड नोटेशन, थर्ड नोटेशन मीन्स असी सिग्मा वेरिएंस नू वेरिएंस की अगर असी गल करिए then we can use any formula from these three formulas. ते हुण असी ये भी करांगे कि अगर फर्स्ट नू सिंपलीफाई करिए या सेकंड नू सिंपलीफाई करिए then we will get the third formula. Now so sigma square is equal to expectation of x minus mu whole square by definition. Now squaring x square minus 2 mu x plus mu square. Now we will use the linearity property of expectation. This can be written as expectation of x square minus 2 mu expectation of x, because mu is constant, plus expectation of mu square, expectation of mu square. So mu square क्योंकि constant है and we know that expectation of c is equal to c. So we will write in the next step expectation of mu square is mu square.
So this is expectation of x whole square to mu expectation of x ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ expectation of x we can write it as mu expectation of x nu we can write it as mu. Now expectation of x square minus 2 mu square plus mu square minus 2 mu square plus mu square minus mu square. So mu ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ expectation of x ਦੀ terms ਚ ਲਿਖੀਏ so mu is expectation of x. So from this in this way we will get sigma square is equal to expectation of x square minus expectation of x whole square. This is the one of the property of the variance. And another property is another important property of variance is variance of ax plus b is equal to a square into variance of x. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੀਨੀਅਰਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ax plus b is equal to expectation of ax plus b is equal to a times expectation of x plus b. लेकिन अगर असी वेरिएंस की गल करिए वेरिएंस ऑफ ax plus b is equal to a square into variance of x. Now we will solve it. How it comes? Now let y is equal to ax plus b. Now expectation of y, expectation of ax plus b, which can be written as a into expectation of x plus expectation of b, which is b. Now we are to find variance of ax plus b, variance of y, variance of y. From the previous property or by definition, variance of y is expectation of y, by definition y minus expectation of y whole square. So what is y? Ax plus b, and expectation of y is a expectation of x plus b क्योंकि इथे माइनस आ so this is minus b. Now cancel b. Now expectation of ax minus a into expectation of x whole square. Now this can be written as taking a common, so this is a square into x minus expectation of x whole square. So because a square is constant in the multiply, we will write it as a square expectation of x minus expectation of x whole square. Again by definition this is variance of x. So therefore this is equal to a square into variance of x. Means variance of ax plus b is equal to a square into variance of x. So in this way we will get variance of ax plus b is equal to a square into variance of x. Means variance of 3x minus 4 is equal to 9, mean 9 is 3 square. 3 square into variance of x. Okay. Now next property is variance of constant is equal to 0. Variance of constant is equal to 0. Now let x is equal to c. अगर असी ये प्रूफ की गल करिए let x is equal to c. Now variance of x is equal to by definition
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ सी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ सी होल स्क्वायर. Expectation of C, we know that expectation of C is C and C minus C is 0. So 0 square is 0. So this is expectation of 0 which is equal to 0. So therefore variance of X, what is X? Variance of C is equal to variance of constant is 0. सो हुण तां बेटा असीं गल कीती आ मीन दी वेरिएंस दी. नाउ नेक्स्ट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन. मीन डेविएशन अबाउट मीन. इफ एक्स इज रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू, अगर एक्स साडे कोल रैंडम वेरिएबल आ एंड म्यू इज दी अर्थमैटिक मीन, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस म्यू, एक्स माइनस म्यू दे मॉडुलस दी जिहड़ी एक्सपेक्टेशन आएगी दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन. मीन डेविएशन अबाउट मीन. मीन डेविएशन अबाउट मीन. नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. Now coefficient of variation is denoted by CV. If X is random variable with mean mu and variance sigma square, mean mu and variance sigma square, then the coefficient of variation is given by sigma. Sigma means standard deviation. Because standard deviation is equal to square root of variance, so which is sigma. So standard deviation over arithmetic mean into 100. So from this we will get the coefficient of variation. हाँ जी बेटा कुछ क्वेश्चंस की गल करते हैं असी. Now two cards are drawn simultaneously without replacement. दो कार्ड ड्रा करने ने विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स. वी आर टू फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स. मीन ते वेरिएंस असीं किहदा फाइंड करना? नंबर ऑफ रेड बॉल्स नूं. ते जिहदा मीन ते वेरिएंस फाइंड करना ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डिनोट कर लांगे कैपिटल एक्स नाल. नाउ लेट कैपिटल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, रेड कार्ड्स, सॉरी नॉट बॉल्स, रेड कार्ड्स व्हेन टू कार्ड्स आर ड्रॉन. Two cards are drawn simultaneously without replacement. So अगर असी एक्स की वैल्यू की गल करिए, दो कार्ड्स ड्रा करने ने, हो सकता उन्हां दे विचों कोई भी रेड कार्ड ना आवे, इहदा मतलब एक्स की वैल्यू 0 हो जू. हो सकता एक रेड कार्ड आ जाए, यह भी हो सकता कि दो रेड कार्ड आ जान. सो अगर असी गल करिए कि कोई भी रेड कार्ड नहीं आया, इट मीन्स टोटल रेड कार्ड किन्ने ने? टोटल रेड कार्ड्स 26 एंड नॉन रेड कार्ड, नॉन रेड आल्सो 26. सो 0 रेड कार्ड इट मीन्स 26 कार्ड दे विचों कोई भी रेड कार्ड नहीं आया, ते नॉन रेड दे विचों जेडे बाकी, इहदा मतलब जेडे दो कार्ड आए ने वो किहड़े सी? जेडे रेड नहीं सी. सो 26 सी 0, रेड दे विचों कोई नहीं आया, ते नॉन रेड दे विचों किन्ने आए ने?
2 ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 52 cards. Total cases are 52C2. Similarly, if there is one red card, so one is red and one is non-red, divided by 52C2. 26C2, 2 reds, non-red कितने हो गए, वो 0 हो गए, टोटल कितना आ गया 52C2. So this is the probability of X. Now we are to find arithmetic mean. Mean means expectation of X. So which is equal to summation X into Fx or Px. So 0 into P0 plus 1 into P1 plus 2 into P2. So 1 into P1 is 26 into 26 divided by 52 C2 ਤੇ 52 C2 ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ then 26 into 51 plus 2 26 C2 that is 26 into 25 divided by 2 divided by 52 C2 52 into 51. Now this is equal to 26 over 51 plus 25 over 51 is equal to 51 over 51 which is equal to 1. Now अगर वेरिएंस की गल करिए, now सिग्मा स्क्वायर is equal to expectation of X minus expectation of X whole square, or we can write it as expectation of X square minus expectation of X whole square. So इसलिए सब तो पहला क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ਅਸੀਂ ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ਉਹਦੀ वैल्यू 1 आ गई सी. ना ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਰੀਐਂਸ फाइंड करना सी सब तो पहला ਅਸੀਂ ਕੀ फाइंड करांगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर which is equal to summation x square px 0 square p0 1 square p1 2 square p2. So 0 into P0 0 plus 1 square P1. Now P1 is 26 by 51 plus 2 square is 4 and P2 की वैल्यू आ जानी है 25 over 102. So 26 over 51 plus 50 over 51 which is equal to 76 over 51. 76 over 51. Now this is the expectation of x square. Now अगर असी वेरिएंस की गल करिए, so therefore variance square is equal to expectation of x square minus expectation of x whole square. 76 over 51 minus 1 square 1. So 76 minus 51 divided by 51 which is equal to 25 over 51. So this is the variance. लेकिन अगर सानू स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जावे then standard deviation is equal to taking square root 5 divided by square root 51. Okay. Next अगर असी एक होर क्वेश्चन की गल करिए, let x have the PDF
x have the PDF 1/2 into x plus 1 when x lies between -1 to +1, 0 elsewhere. We are to find mean and the variance of x. Find ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, mean and variance of x. सब तो पहला अगर ਅਸੀਂ mean ਦੀ ਗੱਲ करिए, mu is equal to expectation of x, क्योंकि x ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल आ, then we will integrate x into fx dx from -1 to 1. So -1 to 1 x into fx is 1/2 into x plus 1 dx. So 1/2 integral -1 to 1 x square plus x dx. So 1/2 integration कितनी, x cube by 3 plus x square by 2 from -1 to 1. So solve करेंगे, then we will get 1/3. So therefore mean of x is 1/3. Now next we are to find variance. So जिद्दां कि लास्ट क्वेश्चन च भी असीं कीता सी कि वेरिएंस फाइंड करन तो पहला असीं फाइंड कर लांगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 to 1 x square into fx dx. So the -1 to 1 x square 1/2 fx x plus 1. So which is equal to 1/2 -1 to 1 x cube plus x square dx. So 1/2 integration कितनी, x to the power 4 plus over 4 x cube over 3 -1 to 1 1/2 1/4 plus 1/3 minus -1 सब्स्टिट्यूट किया 1/4 minus 1/3. So 1/2 into 2/3 which is equal to 1/3. So सब तो पहला असी स्टूडेंट फाइंड की एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. नाउ हुण असी वेरिएंस दे विच वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देंगे. वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर. So 1/3 minus 1/3 whole square, 1/3 minus 1/9. So 3 minus 1, 2 over 9. So in this way we can find the variance or expectation, means mean of random variable x. बेटा इस तो बाद तुसी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. अगर तुहाडा कोई डाउट होए then send me on WhatsApp group. Thank you बेटा.